Chalo. All right. Hi, everyone. Good evening. Just give me one moment. हाँ. ठीक है. Right. For the Chambur Bag students, it is going to be the same lecture which we did some time back when we had that extra session. So you need not sit for this lecture at all because there is nothing new that you will be learning over here. So I will be taking up this nuclear chemistry wala part. Now, as I told you last time as well, हम लोगों ने surface chemistry chapter last class में complete कर लिया था. And as such, I will be taking care of this chapter from the perspective of chemistry and chemical kinetics. इसका एक और chunk है, एक और part है इस chapter का, which is there in the NCERT of class 12th physics under this chapter called as nucleus. ठीक है, so along with these notes, it will be important for you to also go through that chapter. In that chapter, there are concepts related to binding energy and energy mass equivalence, which I have not covered over here. They are more important, or you can say more connected with the aspects of modern physics. So along with these notes, please do read NCERT of class 12 physics chapter, physics में ये nucleus chapter. ठीक है. Now I will proceed in the same manner how I have with surface chemistry. I will be sharing the notes with you. Okay, I will be sharing the recording with you. So you need not right now spend time into writing each thing. Okay, I will be right now sharing the notes on this Zoom chat only, as well as the recording link. ठीक है, मैं Zoom chat पे मैं share कर दूंगा आप लोगों के साथ में. छोटा सा chapter है, it will not take us much time. We should be done within an hour. ठीक है, it's not even a chapter per se. Like it is in addition to your concepts that you had learned in chemical kinetics. Okay, towards the end also I have some questions that are PYQs from the chapter from this section that have been asked in the past 3-4 years in JEE advanced examination. तो वो भी हम लोग quickly देख लेंगे, discuss कर लेंगे. ठीक है. Now talking about this term called as radioactivity, ध्यान से observe करना, ध्यान से सुनना. As an observation of elements around us, what we see or what we observe is that there are certain elements, there are certain isotopes of those elements which are stable, whereas there are certain isotopes that are unstable. Now, these unstable isotopes are called as radioactive isotopes, and their nucleus is what we are referring to as being unstable. Now, as a general understanding, most of the isotopes of heavy elements, like almost all the isotopes of heavy element, bismuth and beyond, they are radioactive in nature, they are unstable. Whereas in case of lighter elements, not all isotopes, but fewer isotopes are radioactive in nature, have an unstable nucleus. Now, what do I mean by radioactive? It means that the nucleus undergoes spontaneous by itself transformation or disintegration by ejection of certain particles. This is what is called as radioactivity. So you would have come across terms like alpha rays, beta rays, gamma rays. So this is the nucleus of these atoms which is not stable, which tries to attain stability by doing these radioactive emissions. Now,
What are these radioactive emissions and why do these radioactive emissions occur? These are two questions that we will be discussing in detail after this. As an additional piece of information, you should understand that radioactivity is, as I highlighted, nuclear property. So it does not depend upon the chemical composition or chemical combination of an atom. Right? So for example, uranium is an element जिसका atom is radioactive. Now, be it pure enriched uranium or be it some uranium in some salt, it does not matter. The uranium atom will show radioactivity, will show radioactive emissions. Unlike chemical reactions, which are impacted by pressure temperature conditions, these radioactivity or radioactive reactions, I would say, are not dependent on temperature pressure conditions. Okay. Now, what are these radioactive emissions? पहले एक बार इनको समझ लेते हैं, इनके थोड़े details observe कर लेते हैं, इनके थोड़े characteristics notice कर लेते हैं, and then we will also talk about the why aspect of radioactivity. हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? All right. तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा रेज की. What are alpha rays? यहाँ पे नोटिस करना, अल्फा रेज आर, और अल्फा पार्टिकल इज 2 protons and 2 neutrons together emitted out of the nucleus of an atom. Now, how it is represented, यहाँ पे नोटिस करना, जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसको पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, एंड आफ्टर रेडियो एक्टिव एमिशन जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनता है उसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं. नाउ ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन रहता है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट. In the superscript you have mass number, which is basically sum of protons and neutrons, and in the subscript you have atomic number, which is the number of protons in the nucleus. So when an alpha particle is emitted, the mass number is decreased by 4 and the atomic number is decreased by 2. This is alpha decay or alpha rays. You have beta rays, in which beta particle is basically an electron. Now, that beta particle is represented with mass number 0 and atomic number as -1. Now, why the atomic number is -1 will make sense to you once you understand that what happens during a beta ray emission. Inside the nucleus, a neutron, which is represented in this manner because its contribution to mass number is 1 but none to atomic number. A neutron converts into a proton and an electron. The proton stays inside the nucleus only, but the electron is emitted, and which we call as beta particle or beta ray. Based on this, if you notice, the atomic number increases by 1. The mass number remains as it is. Notice करना यहाँ पर, I have also mentioned that along with the emission of beta particle, there is emission of this fancy named particle called as antineutrino. ठीक है, इसको ऐसे म्यू ऊपर बार के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या होता है antineutrino is not something which we are going to be able to get into any details right now into. It's an elementary particle out of the family of elementary particles which have been discovered or have been validated in the standard model of physics that we have. But right now that is all that you need to know, the name. Can't get into any further details of it. इतना ध्यान रखना that beta rays के साथ में antineutrinos also get emitted. Now, along with these alpha and beta emissions, notice करना, gamma emissions also occur.
गामा रेज क्या होते हैं? गामा रेज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स और EM radiations that accompany alpha and beta emissions. Now, what happens? यहाँ पे notice करना is that when a parent nuclei disintegrates into a daughter nuclei and some sort of emission, तो जो daughter nuclei है, it undergoes a de-excitation emitting gamma rays. Now, what do I mean by undergoing de-excitation? तो ध्यान से समझना, जैसे अपन लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में समझा था that around the nucleus electron exists in discrete energy levels, higher energy levels, lower energy levels, and upon de-excitation from a higher energy level to a lower energy level, energy is emitted in form of photon. वैसे ही inside the nucleus जो particles present होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. Particles present inside the nucleus also obey the principle of quantized energy states. That means ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो रैंडमली कोई भी एनर्जी लेवल्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं. They also have quantized energy levels, and upon such change in the nucleus, the daughter nucleus के nucleons, they are in the excited state and they de-excite to ground state while emitting photons in gamma ray region of electromagnetic spectrum. Okay, so these are your gamma rays, and of course because of gamma rays there is no change in atomic number or mass number because they accompany the, or they are basically de-excitation of the daughter nuclei. Now, with this basic introduction about alpha rays, beta rays, gamma rays, you should be aware about some characteristic of these rays, most of which you would have done in your junior classes. तो एक एक करके quickly observe करना alpha ray, beta ray and gamma ray के characteristics and comparisons. Now, in terms of representation or in terms of what they constitute, यहाँ पे notice करना, alpha particle is made up of 2 protons and 2 neutrons, right? So it has +2 E charge, okay, +2 into 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, and in terms of mass it is approximately 4 AMU. Whereas a beta particle is an electron only, which has a charge of -1.6 into 10 to the power -19 coulombs, and the mass that of an electron, which is almost 1/2000 times the mass of a proton, या 1/1800 times of an AMU. Gamma rays are photons, are electromagnetic radiations only, which do not possess charge, and we say do not possess rest mass. Of course, there is mass associated with them, but that is based on the concept of energy mass equivalence. E is equal to mc square. Okay, rest mass we say is not there. Now, in terms of their representation, the symbols that are used for alpha particles are as follows. Sometimes I say helium superscript में 4 subscript में 2, या alpha superscript में 4 subscript में 2, right? Beta particles के लिए ऐसे E या beta symbol use हो जाता है, and gamma particles के लिए you have that gamma symbol only. Now, in an electric field or a magnetic field, alpha particles and beta particles are influenced because they have charge. Gamma rays are not influenced by an external electric or magnetic field. Now, these alpha particles, because they are positively charged, they are attracted or deflected towards the negatively charged plate of an external electric field, and vice versa for the beta particles. Now, notice करना यहाँ पर velocity वाला comparison and simultaneously kinetic energy वाला comparison. So in terms of the speed,
as we can clearly see, alpha, beta, gamma, the order of speed is gamma more than beta more than alpha. Gamma particles travel with the speed of light only because they are electromagnetic radiations. But if I talk about kinetic energy associated with these particles, then definitely alpha particles have more kinetic energy than beta than gamma because of their mass. Now, in terms of ionizing power and effect on ZNS, zinc sulfide plate, notice karna the order is alpha greater than beta greater than gamma. So these are two interrelated points because effect on ZNS plate is due to these particles reacting or ionizing the atoms on the ZNS plate. In that alpha particles, because of their greater kinetic energy, because of their greater mass, is able to interact with atoms and easily eject electrons out of them. Gamma rays sometimes can just pass through without interacting much. As a result, 7th and 8th point are also related to each other, which talk about the penetration power of alpha, beta and gamma rays, in which gamma rays have more penetration power than beta and alpha. So 8th point is kind of an example of how much these rays are able to penetrate through a sheet of lead. So alpha particles are able to penetrate some 8 to 12 centimeter of lead sheet, whereas beta particles and gamma particles are able to even penetrate thicker sheets of lead. The last point is about the representation of nucleus, how its atomic number and mass number change upon emission of these particles, which we had just looked in detail some time back. Now, apart from these alpha rays, beta rays and gamma rays, notice karna two more radioactive emissions that we talk about, a positron emission and a K capture. Now, positron emission क्या होता है ध्यान से समझना, उसके लिए पहले तो positron क्या होता है वो समझ लो. तो positron is an antimatter or an antiparticle of an electron. Again, getting into the concept of what is antimatter or what is antiparticle is not something that I can discuss right now. But in physics, there is this concept of matter and antimatter. And जिस तरीके से एक इन फेज एंड आउट ऑफ फेज वेव आपस में कंबाइन करके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, उस तरीके से यहाँ पर बोला जाता है दैट पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल व्हेन कंबाइंड annihilate each other, which result in release of energy. So positron यहाँ पर is an anti-particle of electron. It has the same mass, same magnitude of charge, but of course the sign is opposite. This is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Now, when a positron emission occurs, what happens inside the nucleus is important to understand, that a proton is changing into a neutron and a positron. The neutron stays inside the nucleus, but the positron gets emitted. And this is accompanied with an emission of another elementary particle called as neutrino. Now, after this, notice karna, K capture is also a radioactive emission in which characteristic X-rays are emitted. It happens in the following manner, that the nucleus captures electron from K shell. That is the first shell. Basically, यहाँ पर ये example notice करना, ये एक nucleus का representation है, and it absorbs an electron, not an external electron, but an electron from its own K shell. As a result, you can see the mass number remains the same, but the atomic number decreases by 1. Why? Because within the nucleus, the proton and the electron from the K shell, they combine to form a neutron. So mass number remains the same, but the atomic number decreases by 1. Now, because of the vacancy created in the K shell, the electron from K shell got absorbed in the nucleus. तो यहाँ पर जो vacancy create हुई है, उसको fulfill करने के लिए higher
shells से electrons de-excite into the K shell, which results in emission of characteristic X-rays. ठीक है, so ये समझ में आया आपको different types of emission? So, हाँ, तो इस वाले इसमें के कैप्चर में एंटी न्यूट्रिनो नहीं लगेगा? नहीं, तो मतलब एंटी तो न्यूट्रिनो ऐसे लो जैसे मास तुमको बहुत ज्ञान है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का, नहीं सर, बट इसलिए पूछा। तो फिर मतलब तो मतलब उल्टा रिएक्शन है इसलिए। सिमेट्री का गेम थोड़ा ना चल रहा है, इधर से गया तो उधर से निकला। जी मैंने बोला ना, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच राइट नाउ वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड, इसको बस ध्यान में रख लो। एंड दैट टू आई एम लाइक सेइंग ध्यान रख लो इज बिकॉज एनसीईआरटी ने ऐसे लिख दिया है रिएक्शन में। अभी कई बार एनसीईआरटी भी ऐसे ऐसे लाइक चीजें लिख देता है व्हिच आरंट समथिंग जिसका कॉन्टेक्स्ट इज इजी टू ग्रास्प। तो ठीक है, आप लिख दिया है तो याद कर लेते हैं, बट अदरवाइज टू अंडरस्टैंड दिस इजंट लाइक अ यू नो स्मॉल थिंग टू गेट इनटू पार्टिकल फिजिक्स। वो अपने आप में एक बड़ा बैकग्राउंड चाहिए है टू बी एबल टू गेट अ ग्रिप ऑन इट। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना व्हाई रेडियो एक्टिविटी, राइट। सो मैंने जैसा आपको स्टार्ट में बोला था दैट आई वुड फर्स्ट डिस्क्राइब टू यू व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक तरीके से डिफाइन करा, डेफिनेशन दिया उसको, एंड आई ऑल्सो helped understand that what are these radioactive emissions, different types, इनका थोड़ा सा details समझा। But why does it happen? Why is it that some nucleus are stable, ठीक है, they don't emit radioactive particles whereas some do? Now this question has many answers, ठीक है, each answer is an evolved theory of why this happens, ठीक है। There are many explanations which go into trying to understand what happens inside the nucleus at a very fundamental level. Now, as part of our syllabus, we actually do not get into any of the detailed theories to understand radioactivity and its reasons. What you have in front of you right now is simply an observation based understanding of nuclear stability. It's merely an observation that I'm discussing with you. Even the reason behind that observation isn't something which has simple answer to it. It has a lot of, as I said, theories and concepts helping understand what is inside the nucleus. तो अभी जो मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, it is merely an observation based understanding of nuclear stability. Now, what is this observation based understanding? So what we do is we plot all the different isotopes of different elements on this N versus P graph, right? How do we do that? बहुत सिंपल है। जैसे आपने कार्बन एज एन एलिमेंट लिया, कार्बन का एक आइसोटोप मिलता है C12, यानी कि उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन आपने उसका एक डॉट मार्क कर दिया यहाँ पर। ओके, देन यू टुक अनदर आइसोटोप ऑफ कार्बन से C14 लिया। C14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग आपने उसका एक डॉट मार्क कर दिया। इस तरीके से यू वेंट अहेड एंड मार्क्ड a dot for all the isotopes that you come across in nature around us. Now, one thing to notice that you can see that all these dots are going to be above n by p equal to 1 वाला line. ठीक है, ये n by p equal to 1 by line के ऊपर ही dots मिलते हैं। Why? Because this is important for you to remember and already you know it.
that there are no naturally occurring isotopes जिनमें n by p ratio less than 1 होता है. Number of neutrons are going to be equal or more than the number of protons. ठीक है. Of course एक हाइड्रोजन है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करता है. उसका भी एक्सप्लेनेशन होते हैं, उसके भी रीजन होते हैं that why just isolated proton can exist, not an isolated neutron. A neutron readily decays. So anyways, उस थ्योरी में नहीं जा रहे हैं हम लोग अभी as I said ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स का डॉट प्लॉट कर दिया एंड इनकी कलर कोडिंग करी. दोज आइसोटोप्स विच वर स्टेबल उनको ऐसे ब्लैक कलर में ड्रॉ कर दिया. एंड दोज आइसोटोप्स विच वर नॉट स्टेबल, व्हाट डू आई मीन नॉट स्टेबल, दैट दे वर एमिटिंग सर्टेन पार्टिकल्स, उनको ऐसे रेड में मार्क कर दिया. नाउ अपॉन डूइंग सो what we found out is the black dots are in a cluster and the cluster is called as the region of stability. Now how does that look? यहाँ पे observe करना, for lower atomic weight elements that cluster of stability is around n by p equal to 1. Neutron to proton ratio अगर almost 1 के बराबर है then we say that the nucleus is stable, the isotope is not radioactive. जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं ये n by p का स्टेबिलिटी का रीजन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जाता है एंड टुवर्ड्स हायर एटॉमिक वेट एलिमेंट्स this n by p ratio, the stability region is around 1.6. Now those isotopes which do not fall in this stability region, we see or we notice an important aspect about their radioactivity. For example, इस region में notice करना जो dots है, जो radioactive isotopes हैं, we typically find them to be emitting alpha rays such that their n by p ratio can increase and get into the stable region. जैसे आप ये example notice करोगे, यहाँ पर जैसे यूरेनियम 238 का डीके का एग्जाम्पल शो करा है वेयर इट अंडरगोज अल्फा डीके टू इंक्रीज इट्स n by p रेशियो एंड गेट इनटू अ स्टेबल रीजन. यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं नोटिस करना जिनका n by p रेशियो स्टेबल आइसोटोप्स या स्टेबल न्यूक्लियस से ज्यादा है, so they typically show beta decay in order to decrease their n by p ratio and get into a stable region. ठीक है, बीटा डीके से n by p ratio कम होता है. Look at this example. Now वैसे तो यहाँ पर कोई नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नहीं है जिनका n by p रेशियो 1 से कम हो, बट यस देयर आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स दैट कैन बी क्रिएटेड, आर्टिफिशियल न्यूक्लियस दैट कैन बी क्रिएटेड जिनका n by p रेशियो 1 से कम होगा एंड दे टिपिकली टेंड टू शो पॉजिट्रॉन एमिशन और k कैप्चर in order to increase their n by p ratio and get into the stable region. ठीक है, ये समझ में आया? तो based on this, try and answer couple of questions. Just give me one moment, let me rub the answers and see if you are able to answer these questions based on our discussion right now. ठीक है, in the meantime I will share the notes of today on this Zoom chat only. ठीक है, I will also share the recording link. ठीक है, I hope everyone who has joined this meeting via laptop is able to see that in their Zoom chat. They are able to download the PDF. They are able to also click on the link.
मोबाइल से अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, वो पीडीएफ चैट पे नहीं जाता है फिर। चलो फटाफट आंसर कर दो इसका। ऑल राइट, काफी सारे आंसर्स आए हैं। गुड, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। चेक करना। एक मिनट। बी सी बी, नहीं बी सी सी, दैट इज द आंसर। बी सी एंड सी किस तरीके से, एक बार नोटिस करना। यहाँ पर यू कैन सी, आई थिंक पहले वाले का बी तो सबका आंसर सही रहा है। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया है, बीटा पार्टिकल का एमिशन है। मास नंबर 4 से घट गया है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन है। यहाँ पर वापस से एज यू कैन नोटिस, नो चेंज इन मास नंबर और atomic number, that's a gamma emission. Then loss of beta particle is an equivalent of increase in one proton and decrease of one neutron, because this is what happens inside the nucleus in case of beta particle emission. A neutron converts into a proton and an electron, right? Then यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा का emission करके atomic number same आ जाएगा, so these are isotopes, same atomic number, right? ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है इनमें? ऑल राइट, थोड़े से क्वेश्चंस और ट्राई करो। इसके इन तीनों का बताओ क्या आंसर रहेगा।
हाँ, ऑल राइट, इसका आंसर रहेगा ट्रिपल डी, ऑल द डी ऑप्शंस। बीटा पार्टिकल में क्या हो रहा है, एंड अल्फा डीके में n/p रेशियो इंक्रीज कर रहा है, एंड बीटा डीके में n/p रेशियो डिक्रीज करता है। अभी जस्ट एग्जांपल्स लेके भी एक्सप्लेन किया था। चलो इनका आंसर बता दो। ऑल राइट, लेट्स चेक आउट क्या क्या आंसर रहेंगे इसमें। इसका ए रहेगा, देन बी, फॉलोड बाय ए, एंड अगेन ए। राइट, सिंपल है। किसी को कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन? So, in one of the questions of the previous set, ओके, in an alpha decay n/p ratio increases, but you can't just predict that without previously knowing. Right? विदाउट Previously knowing that it increases, is it possible to predict because you get n-2 upon p minus 2? Right? yeah, naturally occurring elements have n/p more than one only. Okay. So in that case the answer is increases only. Okay. ठीक है, Mhm. now इस क्वेश्चन का आंसर दो, एंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये जो नोटेशन है, ठीक है, दिस इज द, यू कैन से शॉर्ट नोटेशन फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन और अ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। कैसे रीड करते हैं इसको, दैट दिस इज द ओरिजिनल पार्टिकल, इसको अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है, उससे क्या बनता है, अलोंग विद एमिशन ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। क्या आंसर रहेगा, बताओ। हाँ ठीक है हर्षित, राइट शुभम, राइट निशित, ठीक है मीत। इसमें सिंपल क्या करना है, you just need to balance atomic number and mass number, that's it, you will get what atomic number and mass numbers
would be there in that product and accordingly mark. ठीक है, आपको पता नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये सिंबल्स पता हो, MD stands for मेंडेलिवियम, LR stands for लॉरेंशियम, ये सब का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर मास नंबर के साथ में खेलना रहेगा। चलो हाँ। इस क्वेश्चन का भी आंसर दो। हाँ। बोलो बोलो। In one of the previous questions, can you scroll up? क्या प्रीवियस क्वेश्चन में? 29th question. Can you go to that? 29th क्वेश्चन में, हाँ। What is neutron capture? व्हाट इज Neutron capture. न्यूट्रॉन कैप्चर? अब जिस तरीके से हम लोगों ने एक इसके बारे में बात करा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो उस तरीके से एक न्यूट्रॉन कैन बी कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। Decrease, no? तो वो तो करेगा ना NYP को डिक्रीज। बट So neutron from where? Neutron floating in air. हाँ एग्जैक्टली जो मैंने बताया ना कि न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ऐसे आइसोलेटेड न्यूट्रॉन नहीं मिलता है। अ न्यूट्रॉन डिकेज in an isolated state. So then how is a neutron capture possible? हाँ तो that is why it is not an answer, no? Oh, okay. हाँ बट इफ इट इज हैपनिंग, अगर हमने न्यूट्रॉन निकाल दिया किसी भी तरीके से तो NYP तो कम हो गया हाँ तो राजा सिंगल चॉइस है ना, या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ना। ओके या ए ऑप्शन मार्क करो और रैंक लाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। इसका आंसर दो। इनफैक्ट नाउ टू थिंक ऑफ इट, जो ये न्यूट्रॉन कैप्चर वाला एस्पेक्ट होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ फिजन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स आर व्हाट आर अब्सॉर्ब्ड बाय यूरेनियम, which actually does not stabilize it, it actually decays it। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, ये यूरेनियम है, इसको अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, या सॉरी ये मेंडेलिवियम है, इसको अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, तो वैसे यूरेनियम को न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है और उसकी वजह से डीके होके और न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जो कि फिर और यूरेनियम एटम्स को ब्रेक करते हैं, फिजन रिएक्शन, चेन फिजन रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं। एंड अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है, और अगर कंट्रोल कर लिया जाता है तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है। ठीक है, ये उसमें पढ़ना एनसीईआरटी में फिजिक्स के फिजन फ्यूजन का एग्जांपल्स रहेंगे। हाँ करेक्ट, 4 अल्फा पार्टिकल्स एंड 1 बीटा पार्टिकल। अगेन सिंपल, भाई कंजर्व करना है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दोनों को, ठीक है। All right, so with this understanding of radioactivity and how neutrons and protons in the nucleus are influenced by it, let's look into the chemical kinetics aspect of it, or not chemical kinetics actually, just kinetics, or I should say nuclear kinetics aspect of it, that radioactive decay follow first order kinetics. Now first order kinetics ये हम लोगों ने already chemical kinetics chapter में पढ़ लिया था। इसका representation थोड़ा सा different था, R
was equal to minus ऐसे dA by dt is equal to k a raised to the power of 1. इस तरीके से लिखा था अपन ने. Rate of reaction was change in concentration upon time taken, and it was directly proportional to concentration raised to the power of 1. That was first order chemical kinetics. यहाँ पर अब R rate की जगह we use the term A, that is called as activity. Then concentration की जगह we use the number of radioactive nuclei. dN by dt, n represents the number of radioactive nuclei. Instead of rate constant, we use the term decay constant or radioactivity constant. We represent it by symbol lambda, which is, as I said, directly proportional to n, the number of radioactive nuclei raised to the power of 1. Now, upon integrating this differential form, you get the following integral form, which also you are very much aware about. जैसे पहले था वैसे ये ln n naught by nt equal to lambda t हो जाएगा, where n naught is the initial number of radioactive nuclei and nt will be the final number of radioactive nuclei. Now, half life, जैसे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, was ln 2 by lambda, वैसा ही यहाँ पर भी ln 2 by k था, वैसे यहाँ पर ln 2 by lambda रहेगा. Average life, ये भी पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में. कितना रहता है एवरेज लाइफ? 1 by lambda. 1 by lambda. ठीक है, यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना है यहाँ पर. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज डीपीएस और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डीके पर सेकेंड. इसके अलावा भी देयर आर सम यूनिट्स दैट कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चन. इट इज हाईली लाइकली कि इंटर कन्वर्जन क्वेश्चन में मिल जाएगा between that unit and DPS, but if not, then I would recommend remembering at least these ones named after the scientists who were pioneers in the field of radioactivity. Becquerel, Rutherford, Curie, इनका DPS के साथ में कैसा connection है. And of course, then some logical interconversions like 1 decay per minute is equal to 60 decay per second, right? 1 decay per hour will be equal to 3600 DPS. ठीक है. Now, next notice करना, ये क्वेश्चन चलो ट्राई कर लो फटाफट. हाँ, राइट शुभम, राइट प्रथमेश.
हाँ, कैसा रहेगा? नोटिस करना, सिंपल ये यूज करना, एक्टिविटी वाज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन. नाउ लैम्डा तो दिया हुआ है एज इट इज क्वेश्चन में. व्हाट अबाउट एन? एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो मोल्स इनटू Na से निकाल लेंगे. मोल्स कैसे हो जाएगा? मास अपॉन एटॉमिक मास. तो वहां से आपको ये एक्टिविटी मिल जाएगा. ठीक है. क्लियर है ये? Yes. ऑल राइट. चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो. सिंपल है इसमें तो. either you can use the formula or just simply use the half life by half life decay, right? Okay, let me rub answers with एक दो questions का और try करना. These are mostly now PYQs from JEE Advanced. ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? हाँ, इसका आंसर बता दो.
तो वो निकालना है ना z का एटॉमिक नंबर, दैट इज व्हाट डी ऑप्शन इज आस्किंग निशित. ऑलराइट. तो इसमें अब नोटिस करना क्या हो रहा है, यहाँ पर यूरेनियम से यहाँ थोरियम जा रहा है. यू कैन सी द एटॉमिक नंबर इज चेंजिंग बाय 2 एंड द मास नंबर इज चेंजिंग बाय 4. तो ये आपका अल्फा पार्टिकल हो गया. यहाँ पर थोरियम से टी ए कौन सा होता है ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट यू कैन सी मास नंबर में चेंज नहीं आ रहा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो ये बीटा पार्टिकल हुआ. ठीक है. देन ये Z क्या है, इसका मुझे डाउट है क्योंकि दिया ही नहीं है. एटॉमिक नंबर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पहले बैक ट्रेस कर लेंगे. ये थोरियम है, थोरियम से यू कैन सी एटॉमिक नंबर 4 का डिफरेंस है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल ही होगा, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 92 होगा. अगर इसका एटॉमिक नंबर 92 आ गया है तो फिर यहाँ से अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे दैट अगेन ये बीटा पार्टिकल होगा X3. So X1 is deflected towards negatively charged plate, yes. X2 is beta particle, X3 is gamma ray, no. Z is an isotope of uranium. ABD आंसर हो जाएगा. ठीक है, करेक्ट. ऑल राइट, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इसका आंसर दो.
Sorry. All right. यहाँ पर करेक्ट, ये अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना, के कैप्चर और पॉजिट्रॉन emission. This would result in increase of n by p ratio in case the n by p ratio is less than 1. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का नहीं होता, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का रहता है ये. ऑल राइट, इसका बताओ. दिस इज more related to chemical kinetics. कुछ आ पा रहा है इसका आंसर? राइट निशद, राइट रोहन. नहीं वंश, नहीं मिहिर. शुभम का ठीक है. नहीं तने, नॉट करेक्ट. नहीं मिहिर, नॉट करेक्ट. क्या तुक्के पे तुक्के मारे जा रहे हो तुम मिहिर? रैंडम नंबर जनरेटर लगा रखा है क्या? नॉट करेक्ट. यहाँ पे नोटिस करना दैट व्हाई इज इट दैट द प्रेशर विल चेंज इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, थोड़ा और एक्सपेक्टेड नॉलेज है. व्हाट इज दैट एक्सपेक्टेड नॉलेज? यहाँ पे नोटिस करना, द एक्सपेक्टेड नॉलेज इज नंबर 1, यूरेनियम का डिके इनटू लेड का रिएक्शन. ठीक है, कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं. दूसरा इसमें एक्सपेक्टेड नॉलेज है अबाउट द फिजिकल स्टेट. यूरेनियम, लेड, ये सब सॉलिड रहेंगे. जो अल्फा पार्टिकल रहेंगे एंड बीटा पार्टिकल रहेंगे, ये एक्चुअली गैशियस फॉर्म में रहेंगे. नाउ तीसरा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो रहेगा इज दैट it is the alpha particles that are going to contribute to the increased pressure, not even the beta particles.
ठीक है, बीटा पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लाइट. तो think about that KTG का discussion in which momentum is transferred on the walls upon collision. Beta particles will have negligible as compared to alpha particles. Alpha particles are like helium particles only, helium gas की तरह. तो यहाँ पर notice करना that because of decay of 1 mole of uranium, 8 moles of alpha particles are generated. As a result, the gaseous particles के moles, which are responsible for pressure, that changes from 1 to 9. And because V and T is constant, the pressure becomes 9 times the original value. अभी समझ में आया? आ गया है तो फिर ये लास्ट सवाल कर लो, इसका आंसर भी निकाल लो, क्या रहेगा? नहीं वंश, केयरलेस मिस्टेक कर दिया तुमने. यूनिट्स या कैलकुलेशन दोबारा देखो. नहीं कृष्णा, तुमने भी क्लोज है बट नॉट द करेक्ट आंसर. अभी ठीक है. अभी भी ठीक नहीं है, देखो छोटा सा एरर है. क्या दूंगी? ठीक है आदित्य. नहीं चित्राक्ष. नहीं रोहन. क्लोज बट स्लाइटली मिस्ड. हाँ ठीक है शुभम, करेक्ट. देखो ना, इसमें 3 हाफ लाइव्स के बाद क्या होगा? हाँ अभी ठीक है रोहन. हाँ राइट क्रिश. ठीक है, यहाँ पर ये again this knowledge of reaction is something that you should be able to write. यूरेनियम से लेड जा रहे हैं, कितने अल्फा कितना बीटा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं.
and अब say initial moles are A. Now after 3 half lives have gone, तो यूरेनियम A से A/8 हो जाएगा, है ना? एक हाफ लाइफ गया तो A से A/2 हुआ, दूसरा हाफ लाइफ गया तो A से A/4 हो गया, तीसरा हाफ लाइफ गया तो फिर A/8 हो जाएगा, राइट? तो कितना रिएक्ट कर गया? 7 A/8 रिएक्ट कर गया, तो 7 A/8 रिएक्ट कर गया, तो एज पर द कोफिशिएंट्स 8 times 7 A/8 moles of alpha particles are generated. Now 8 times 7 A/8 means 7 A moles, and moles is mass upon molecular mass into Na will be the number of alpha particles, and that is represented as Z into 18. इसको simplify करोगे तो Z का value 1.2 आता है. Please work on your calculations, guys. आते हुए सवाल गलत नहीं होने चाहिए, बड़ा पछताओगे. Don't be in a hurry. Double check before you mark answers. ठीक है, अभी भर भर के टेस्ट देने के मौके मिलेंगे. Ensure that these things are taken care of. ठीक है, चलो यही था. And as I said in the beginning of the class as well, over and above this, ये मैंने chemistry related discussion करा है. इसमें there are aspects of binding energy and energy mass equivalence, nuclear fission, nuclear fusion, ये सब physics की NCERT में है. Please make sure that you read that. उससे भी questions पूछे जाते हैं, both in mains and advanced. So there was binding energy, energy mass equivalence, and Nuclear fission, nuclear fusion, उसमें एक ये important diagram है binding energy per nucleon वाला, जिसमें maximize iron का, helping you understand that iron is the most stable nucleus that is there. Smaller elements fusion करके iron पे जाते हैं, larger elements fission करके iron पे आते हैं, right? So when a star collapses, the max it goes is to iron. ठीक है, तो ये सब पढ़ना वो फिजिक्स में डेफिनेटली है. हाँ, ये नोट्स मैंने भेज दिए हैं इस पे जूम चैट पे. दोबारा अपलोड कर देता हूँ इन केस समवन मिस्ड. ठीक है, सर हाँ सर ये लास्ट क्वेश्चन में हम ऐसा सोच सकते हैं कि पूरे रिएक्शन में 8 अल्फा पार्टिकल्स आ रहे, तो हाफ लाइफ के टाइम में 4 आएंगे, फिर उसके नेक्स्ट हाफ में 2, फिर 1, फिर टोटल 7 वैसा. है, ये कैसा थिंकिंग था? तो पूरे डिसइंटीग्रेशन में 8 अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, तो Okay. उसके हाफ में 4 आएंगे, फिर उसके नेक्स्ट हाफ में 2 और नेक्स्ट में 1 वैसा. गजब यार, तुम तो मतलब सीधा सोचने में, मतलब उल्टा सोचने में माहिर हो. तुम्हारी ब्रेन की वायरिंग थोड़ी स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया था 1 पॉइंट. वायरिंग तुम्हारी थोड़ी फ्यूज हो गई है. सिंपल सोचने की जगह तुम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीजों को. बढ़िया है बेटा, कंसल्टेंट बनोगे तुम. यही करते हैं, सिंपल चीज को कैसे घुमा फिरा के बताना होता है. चलो ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स? इफ नॉट तो फिर आई विल क्लोज द सेशन. चलो, ऑल राइट देन. थैंक यू गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.